Hello and welcome to Kashmir Now. I'm your host Uzma. Let's take a look at some stories of this week's episode. Protests break out in POK as government cracks down on demonstrations against electricity bill hike. People in Skardu in illegally occupied Gilgit-Baltistan hit the streets due to lack of basic facilities. Tourism Department in Gandarbal begins homestay initiative for growing tourist footfall. Jammu's folk studio reviving traditional Kashmiri music. And later, in our section of Incredible India, we will take you to witness the mesmerizing beauty of Gira waterfalls in Gujarat, one of the most beautiful places to visit in the state. Pakistan-occupied Kashmir is a region where a major percentage of population is living under abject poverty, and the Pakistan government is insistent in making their lives even worse. Recently, a large number of people took to the streets in Muzaffarabad district of Pakistan-occupied Kashmir when government tried to silence those who were protesting against unfair hike in electricity bills. A large number of locals took to streets against authorities in Pakistan-occupied Kashmir as the government cracked down against those who were protesting against the unjust hike in electricity bills. While they were subject to police high-handedness during demonstrations, a large number of them were dragged to jails and were charged with different punishable sections. The demonstrators said they would intensify their protests if the locals who were held illegally were not freed immediately. They also said they will step up the agitation against the electricity charges that were being collected from them. हम हर तरह की कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं और लोगों से गुजारिश करूंगा कि बिजली के बिल जमा नहीं करवाने। ये जो रात से एक नोटिफिकेशन चल रहा है, हम जूते की नोक पे पूछते हैं नोटिफिकेशन को कि लॉलीपॉप है, कोई आपने बिल। और यहाँ जब धरना लगेगा, हम सारे लोग यहाँ आके रोजाना की बुनियाद पर अपने बिजली के बिल चलाएंगे और ये साबित करेंगे कि जब तक हमारे हुकूक हमें मिलते उस वक्त तक ये एहतियात जारी रहेगा। People in the illegally occupied region of Kashmir accused the Pakistani establishment of systematically pushing them into a life of misery. A large section of people in the illegally occupied regions of Kashmir is already reeling under abject poverty, and despite this, the government of Pakistan is hell-bent at making the standard of their lives even worse. However, they have threatened the administration, saying they will not bow down this time and will consider a different recourse if their demands were not fulfilled. तुम जो अपनी ताकत के ऊपर तुम्हें नाज है, तुम कश्मीर की तारीख को उठा के देखो। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज जो हमारे लोगों ने जो 1947 में जो स्वराज की तारीख चली थी, जो मुंतकी अंजाम तक पहुंची थी, आज फिर जो सियासी कमाशों जो यहाँ के जालिम और जानवर हुक्मरानों के खिलाफ जो स्वराज और साइंस की तारीख चली है, इंशाअल्लाह ये भी तुम्हें डोगरों की तरह यहाँ से कस्ते फांस दिया जाएगा। जेलों के ताले टूटेंगे, साथी हमारे छूटेंगे। जेलों के ताले टूटेंगे, साथी हमारे छूटेंगे। The region has been under illegal occupation of Pakistan for over 7 decades. Successive Pakistani governments made sure that they do worse than their predecessors to further subjugate and marginalize the people of occupied regions. People say they have come to terms with the fact that they are second-class citizens under Pakistani rule. However, they will keep fighting for their right to food and dignity, which the government has been trying to snatch through different means. Let's move to Pakistan-occupied Gilgit-Baltistan, where the common people are suffering due to Islamabad's negligence and poor policies.
The residents in Skardu are protesting on roads to demand basic facilities like drinking water, electricity and healthcare. Pakistan has forced them to live a backward life and kept them away from these facilities to destroy their coming generations. We have a report. These kids and women in Skardu area of illegally occupied Gilgit-Baltistan are raising their voices against Pakistan's callous and coercive policies to destroy their future generations. They are forced to live under deplorable conditions with no electricity, no healthcare facilities and no schools. The region with abundant natural resources has the potential to become a major tourist destination, but lack of basic facilities like clean drinking water, electricity supply and health infrastructure due to negligence of the authorities has pushed them towards abject poverty. Locals believe the women in the region also face security problems due to poor policies of the government. हम कहते हैं कि पर्दा के एहतराम करे, हम सयाहों को पर्दा पहनाने पे लगे हुए। दूसरी हमारी अपनी माएँ बहनें, हमारे अपने माएँ बहनें पानी के लिए रोड पर निकलते हैं। मेरा सवाल है इन दानिश्वरों से, उन उलमाए कराम से, उन बुजुर्गान से, खुदा के लिए सयाहों को पर्दा पहनाने की बजाय हमारे माँ बहनों को पानी दे दे, हमारे माँ बहनों को सेहत की सहूलियत दे, हमारे माँ बहनों को बिजली फराहम करे ताकि हमारे माँ रोड पर ना आए। मैं सूबाई हुकूमत से अपील करता हूँ, खुदा रहा कब तक बल्तिस्तान को बेवकूफ बनाते रहोगे। दो प्रोजेक्ट है हमारा, अहम दो प्रोजेक्ट है। शतू नाले पर काम का आगाज करे तो स्कर्दू के पानी का मसला हल होगा। शगारथंग, हरपो या वाड़ी में से एक प्रोजेक्ट पर काम का आगाज करे तब जाकर स्कर्दू के बिजली का मसला हल होगा। नहीं तो आज हम रोड पे आए हैं, कल दूसरा ग्रुप आएगा, परसों तीसरा ग्रुप आएगा। ये पूरा सीजन लोगों को, हमारी माँ बहनों को रोड पे गुजारना होगा। Since its occupation in 1947, Gilgit-Baltistan is being governed by Islamabad without extending full constitutional status to the region. Its current status is based on administrative control by Pakistan over the past 7 decades. This has hampered social, political, constitutional, legal and economic prosperity of the region. The people of Gilgit-Baltistan blame the local politicians who act as puppets of Pakistani officials. महकमे के लोग गफलत में सोए हुए हैं, पता नहीं क्या उन्होंने नशे किए हुए हैं। ठीक है, हमने जिनको वोट दिया हुआ है वो तो गिलगित से तरफ आने के लिए तैयार ही नहीं है ना, अयाशियां फरमा रहे हैं। ठीक है, राजा साहब अयाशियां फरमा रहे हैं, उनको इस्लामाबाद से इधर आने की तौफीक नहीं है। ठीक है, जो इलेक्शन के दिनों में नजर आते थे वो नुमाइंदे भी गायब। मैं हमेशा कहता हूँ ब्यूरोक्रेसी ने कभी हमारे मसले हल करने की कभी कोशिश नहीं की, और इन तमाम बुराइयों का जड़ हमारे मुंतखब नुमाइंदे हैं जो आवाम से वोट तो लेते हैं, लेकिन इनका सारा सार काम ब्यूरोक्रेसी की तारीफ करना, इन्हें चादर पहनाना, इन्हें हार पहनाना, उन्हें टोपियां पहनाना है। हमारे वोटों से मुंतखब होने वालों, शर्म करो, हया करो। तेरी माएँ बहनें रोड पे और तुम शंदूर में डांस कर रहे हो। The part of erstwhile princely state of Jammu and Kashmir, Gilgit-Baltistan is suffering at the hands of Islamabad. The strategically located region was looted for decades by Pakistan and is now given access to China for exploiting its resources and the territory for its multi-billion-dollar China-Pakistan Economic Corridor or CPEC project. The existence of the people of Gilgit-Baltistan remains in danger. Next, we move on to Jammu and Kashmir, which is witnessing record tourist arrivals in the present times. To cater to this growing footfall of tourists, the J&K administration is committed to make availability of 50,000 rooms through its homestay initiative. Manaswal Lake in Gandarbal district is one such destination which is offering this service. Take a look. 50,000 rooms, 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 50,000
The Tourism Department of Jammu and Kashmir has started a cluster of homestay services at several places across the territory in a bid to cater to the increasing demand of accommodation amid massive tourist footfall. The nearby areas of Manasbal Lake in Gandarbal districts are also offering these services. Tourists who earlier had to stay in hotels and houseboats in resorts of Kashmir Valley to enjoy their trip can now avail these homestay facilities while visiting Manasbal Lake. Aimed at promoting ecotourism, these homestays will not just involve the people at grassroots level in expanding the tourism of Union Territory, but will also benefit them financially. Moreover, the tourist will get to enjoy the countryside experience and the natural environment. यहाँ पे हमारी कोशिश है कि इको टूरिज़म हम यहाँ प्रमोट करें और होम स्टेज जो है हम प्रमोट करें. वी हैव अ होल क्लस्टर ऑफ होम स्टेज है. आज डिपार्टमेंट यहाँ और भी कई होम स्टेज रजिस्टर करने जा रहा है. आपने सुना होगा कि रिसेंटली वी हैव अ न्यू होम स्टे गाइडलाइन एंड पॉलिसी जिसमें वी आर मेकिंग इट ईजियर फॉर पीपल टू रजिस्टर फॉर होम स्टेज. और उसका पर्पज़ ये है कि जो टूरिज़म का बेनिफिट है इट शुड गो राइट डाउन टू द ग्रास रूट्स, राइट डाउन टू द लोकल्स, एंड वी आर वर्किंग टूवर्ड्स एक्सपीरियंशियल टूरिज़म. जो भी टूरिस्ट आता है ही शुड गेट अ लोकल एक्सपीरियंस ऑफ द लोकल पीपल, द लोकल लाइफ, द लोकल फूड, द वे ऑफ लाइफ दैट वी हैव. आप देख रहे हैं जिस होम स्टेज में हम अभी खड़े हैं यहाँ, व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस दिस इज ओवरलुकिंग द लेक. और सामने यू हैव अ लवली वंडरफुल एप्पल ऑर्चर्ड, अ लिटिल वेजिटेबल गार्डन ऑल्सो, जो लोग यहाँ एक्सपीरियंस करें. आई थिंक दिस इज एन एक्सपीरियंस विच पीपल विल relish. This homestay service around the lake is likely to boost local businesses. People of the area are welcoming the step of the tourism department as they are expecting employment through this service. The department has also issued homestay guidelines and policies that will make the registration easier. इससे बेरोज़गारी का जो मसला है वो ऑलमोस्ट किसी हद तक मुझे लगता है कम हो सकता है. तो इससे जो यूथ है वो इसका होम स्टे के काम में थोड़ा बिजी रह जाएंगे. तो ये होम स्टे हमारे लिए भी एक अच्छा स्टेप हो सकता है. It's a great initiative by the tourism of Kashmir, tourism department of the Kashmir, as I will say it will boost the economy of the unemployed youth in Kashmir, as they are trying to get the jobs, but unfortunately this time it is very difficult to get the government job. So I think this is a really nice initiative to get our lives better. Presently we are happy that we are getting something new by the government, as this initiative has been taken newly. This is a really good step. It will boost the economy. Also we will get the job, and some people may also get attracted by we people, and they will try to get to this homestay. There are several unexplored destinations in Jammu and Kashmir that remain unreachable to tourists. The Jammu and Kashmir administration has identified 75 locations and is taking different initiatives for the development of these areas. It has also taken several measures to attract tourists and get a mesmerizing experience of visiting the Kashmir Valley. At Gandarbal's Manasbal Lake, the J&K Tourism Department organized a festival to promote local art and culture, food and water sports activities. मुझे लगता है कि मानसबल जितने भी लोग इर्द गिर्द में इसमें रहते हैं तो उनके लिए एक बेनिफिट पॉइंट हो सकता है. ये यहाँ पे जो सभापुरा ब्लॉक में यहाँ पे हाई क्वालिफाइड लड़के हैं जिनके लिए ये एक अच्छा सा कदम साबित हो सकता है. तो इसके साथ मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे उन्होंने ये होम सिटी का आगाज़ किया है
जो यहाँ पर मानसबल के इर्द गिर्द में जिनको ये रजिस्ट्रेशन देंगे, मैं टूरिज़म डिपार्टमेंट को बहुत शुक्रगुजार हूँ और उनको शुक्रिया अदा करता हूँ कि अगर वो हमारे बच्चों के लिए ये एक अच्छा स्टेप है तो मुझे लगता है कि बेरोजगारी का खात्मा हो जाएगा इंशाल्लाह इसके लिए। Over 79 lakh tourists visited J&K between October 2021 to March 2022, which indicates that the prevailing situation is favorable to the growth of the tourism sector in the Union Territory. Artists in Jammu and Kashmir are making efforts to recognize, revive and re-establish the traditional folk music of the region. The underlying reason behind this is the need to impart and instill these traditions to the current generation. A recent initiative named Folk Studio is producing tracks in regional Kashmiri languages to spread the magic of Kashmiri culture through their melodious tracks. The musical scenario of Jammu and Kashmir is continuously evolving. Folk music like Ladisha and Sufiana Kalam make an important part of Jammu and Kashmir's heritage and help the younger generations in connecting to their roots. A recent initiative named Folk Studio held a launch event at a police auditorium, Jammu, where they launched a brand new Dogri music track. इसमें हमने क्या है कि जो यहाँ के काफ़ी रिनाउंड सिंगर्स हैं, सीनियर्स हमारे, हमने ज़्यादातर उनको इसमें लाने की कोशिश की है, क्योंकि जितने हमारे अच्छे बड़े सिंगर्स इसमें पार्टिसिपेट करेंगे तो जो नए आर्टिस्ट हैं उनके लिए एक इंस्पिरेशन की बात भी होती है और एक मोटिवेशन भी मिलता है उनको। और जैसा कि अब शो की एक अपनी लिमिट होती है कि हाँ हम एक सीज़न में इतने ही गाने कर पाएंगे, फिर भी हमने कोशिश की है कि हम मैक्सिमम नंबर्स ऑफ आर्टिस्ट को इसमें मौका दें। और इसमें कुछ हमने नए लोगों को भी लिया, ऐसा नहीं है कि सारे पुराने लोग हैं। तो अगले सीज़न में हम ऐसा सोच रहे हैं कि हम काफ़ी सारे नए आर्टिस्ट को और ज़्यादा मौका देंगे, क्योंकि जबकि ये पहला सीज़न था इसलिए कुछ रिनाउंड फेसेस इसमें ज़रूरी थे। A number of Kashmiri youngsters are producing fusion style of music where traditional folk music and instruments are combined with modern beats and style. Brainchild of Akash Dogra, the Folk Studio is a similar initiative that aims to revive traditional Kashmiri music by adding modern beats to tracks that are sung in traditional languages like Dogri. Eminent singers like Suraj Singh and others were present at the event who enthralled the audiences with their iconic performances. तकरीबन 2 साल पहले मैंने जम्मू से बाहर विज़िट किया और मैंने देखा कि बहुत सारे बड़े बड़े इवेंट्स ऑर्गेनाइज होते हैं जम्मू से बाहर, और इस तरह के कितने सारे शोज़ वहाँ चलते हैं। जैसे कि आप सब देखते होंगे कोक स्टूडियो चलता है और मिक्स टेप चलता है, बड़े बड़े चैनल्स इसको टी सीरीज़ भी कर रहा है। तो मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि क्यों ना हम जम्मू में भी इस तरह का कोई शो करें। बेशक इतने बड़े लेवल पे ना कर पाएँ, बट एक कोशिश की जा सकती है जिसमें हम लोग अपने फोक को रिवाइव करें, अपने जम्मू कश्मीर की जितनी भी लैंग्वेजेस हैं, भाषाएं हैं, उनको रिवाइव करें, और जो पुराना ओल्ड जो हमारा फोक है विद द हेल्प ऑफ ओल्ड जितने हमारे आज के जो हमारे सीनियर्स लोगों के साथ एक कोलैबोरेट किया जाए यंगर जनरेशन का, और नए पुराने फोक को नए ढंग से पेश किया जाए विद कंटेम्प्रेरी जेनरिक। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो फोक स्टूडियो इन्होंने शुरू किया है, ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है इनका। और इसमें सबसे बड़ी बात मुझे यही इनकी अच्छी लगी कि इन्होंने बड़े अच्छे अच्छे कलाकारों को साथ में जोड़ा है, जैसे कृष्णा जी, जैसे हमारे अभी पापा जी ये कृष्णलाल प्रेमी जाट जी, और कुछ नए लोग भी मिलके, सोनाली खुद भी उसमें है। तो ये एक बहुत बढ़िया इन्होंने प्रोजेक्ट शुरू किया है। और मैं जब पिछली बार गया था तो मैंने देखा था, और रिकॉर्डिंग भी बड़ी अच्छी की उन्होंने, काबिल बुखारी ने।
तो बहुत अच्छा मुझे लगा ये कंसेप्ट इनका कि इन्होंने इतना अच्छा ये सभी कलाकारों को जोड़ के रखा। हालांकि कलाकार थोड़े मिलते नहीं हैं, आपस में इकट्ठे कम होते हैं, लेकिन ये इनका कमाल है इनके भाई का विकास डोगरा का, के सारे कलाकारों को इकट्ठे मिलकर जोड़ के तो ये प्रोग्राम किया है जो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। The folk studio collaborates with eminent folk singers and record folk songs which are then released on YouTube channel of Natya Root Productions and other social media platforms as well. These singers hope that the entire world becomes aware of the magic of Kashmiri culture and traditions through their melodious tracks. The dedication of Kashmiri youngsters toward their culture and traditional arts is quite praiseworthy. Today in our section of Incredible India, we will take you to explore the Gira waterfall of Gujarat, which is endowed with implausible natural beauty. Known as the Cherrapunji of Gujarat, this waterfall is one of the most picturesque sites in the state and is frequented by a number of tourists every day. Situated in a verdant setting near Saputara hill station, Gira or Giradhor waterfall is a beautiful seasonal cascade in Dang district of Gujarat. Also known as the Niagara of the state, the waterfall is formed after it emerges from Kapri tributary and falls from 75 feet high cliff, dropping into Ambika river. The speed of water plunging into the river creates a foggy look, giving a very charming feel. Gradually, the waterfall is developing into a popular picnic spot that attracts a number of tourists who are looking for a respite from their daily life. हम आज यहाँ डांग जिला में गिरा वाटरफॉल पे है। बहुत ही खूबसूरत वाटरफॉल है, एकदम रॉ नेचर है, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। और पूरा रास्ता यहाँ अहमदाबाद से डांग तक आने का इतना सुंदर, इतना खूबसूरत है, ऐसा लगता है कि आपको इंडिया के बाहर जाना ही नहीं ज़रूरत है। इंडिया के अंदर ही इतनी खूबसूरती है कि हम शायद उसको एंजॉय नहीं कर पाते। तो मेरा सजेशन है कि जो भी इस वीडियो को देख रहा है, अपने आइटिनरी में एक बार डांग में आने का ज़रूर कोशिश करें। ये बहुत ही सुंदर जगह है, यहाँ के लोकल भी बहुत ही हेल्पफुल है। और गिरा वाटरफॉल अनडाउटेडली गुजरात का तो मुझे सबसे सुंदर वाटरफॉल लगा है। Gira waterfall can be reached via a jeep ride which is available for hire, but they are only allowed to a point which is 1 kilometer away. Around the waterfall there are a number of small stalls set up by the tribal artists who sell their traditional arts and handicrafts. One can also grab a quick bite from the eateries present there. से आए हैं सापुतारा। दिस इज माय सेकंड ट्रिप एंड दिस इज रियली ब्यूटीफुल। बहुत ही फ्रेश है, यहाँ पे एकदम रॉ नेचर है, फुल ऑफ ऑक्सीजन। एक पुल जो बीच में थोड़ा सा टूटा हुआ था वो भी बहुत जल्दी ये लोग ने रिकंस्ट्रक्ट कर दिया, जिसकी वजह से हमें यहाँ आने में कोई भी दिक्कत नहीं हुई। रोड्स वगैरह एवरीथिंग वाज रियली गुड। यहाँ पे मैं जब रास्ते में वापस जब हम आ रहे थे तो हमने देखा बहुत सारे हैंडीक्राफ्ट्स हैं। यहाँ के जो ट्राइबल्स हैं उन्होंने बहुत सुंदर सुंदर मग्स बनाए हैं, बोट्स बनाई हैं। दैट इज़ रियली ब्यूटीफुल। इंडियन हैंडीक्राफ्ट इसमें अच्छे से देखने को मिलता है। और अभी हम लोग गिरा रोड के सामने हैं। दिस इज अगेन रियली ब्यूटीफुल। While paying a visit to Gira waterfall, one can also explore several stunning destinations nearby.
One among them is Saputara, which is a beautiful hill station in Gujarat, blessed with natural beauty and biodiversity. Another wonderful spot is Vansada National Park, which is located amid Sahyadri ranges and consists hundreds of unique flora and fauna. Few others in the list are Waghai Botanical Park, which is a biodiversity conservation center with a wide range of native and exotic plant samples, and Purna Wildlife Sanctuary, which is known to have the thickest forest cover in Gujarat with a wide range of flora and fauna. मैं मुंबई से आई हूँ और ये डांग के लिए हम लोग खास मुंबई से इधर आए हैं। ये नेचर देखने का, फॉल्स देखने का हम लोग को बहुत पसंद है। खास इसके लिए हम लोग इधर ही आए हैं। कभी आए थे पहले बार मतलब? नहीं, बहुत साल पहले हम लोग छोटा था तब भी आए थे। तब तक हम लोग अभी आए नहीं। हम लोग खास फॉल्स देखने को, बारिश में ग्रीनरी देखने को मजा आता है हम लोग को, वही देखने को आए। मैं अहमदाबाद से आई हूँ। मैं यहाँ पे गिरा दोद से आपसे बात कर रही हूँ। ये गिरा दोद है, ये डांग जिला का बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर नज़ारा है। डांग जिला की एक खासियत है कि यहाँ पे जो दूध गिर रहा है उसका पानी ट्रांसपेरेंट नहीं है, लेकिन ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। आप देख सकते हैं वहाँ पे बहुत अच्छा नज़ारा है। यहाँ पे जो कुदरत का सौंदर्य बहुत ही अप्रतिम है। Owing to the nature of its landmass, which is coupled up with lush green surrounding, Gujarat has an impressive collection of picturesque waterfalls that can put all your stress at bay. That's all we have for you in this week's episode. Till we see you next week, it's goodbye from the entire production team.